વડોદરામાં પાણીની સમસ્યાનો વિરોધ કરવા નીકળેલી મહિલાઓની પોલીસે ટીંગાટોળી કરી અટકાયત કરી હતી। વડોદરામાં પાણી માટેનું અહિંસક આંદોલન ઉગ્ર બન્યું। મહિલા પુરુષોએ માટલા સાથે મૌન રેલી યોજી ઘર્ષણ થતાં પોલીસે ટીંગાટોળી સાથે 20થી વધુની અટકાયત કરી। તો ગતરોજ શહેરના સમા વિસ્તારમાં પાણી મામલે મહિલાઓ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો હતો। વિરોધ શરૂ થયાના થોડા જ સમયમાં પોલીસ દ્વારા તમામને ડિટેન કરવામાં આવ્યા હતા કે ઘર્ષણના દ્રશ્યો સર્જાયા, જે મામલે ભારે ઉહાપોહ થતા ડીસીપી કક્ષાના અધિકારી તેની તપાસ સોંપવામાં આવી છે। આ સમગ્ર મામલે જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનર ડોક્ટર લીના પાટીલ દ્વારા પ્રેસ વાર્તાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં તેમણે વિગતવાર માહિતી આપી છે। સિનિયર અધિકારીને તપાસ સોંપાઈ। વડોદરા શહેરના જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનર ડોક્ટર લીના પાટીલે મીડિયાને જણાવ્યું કે સમા વિસ્તારમાં પાણી મામલે વિરોધ સમયે ત્યાં પોલીસ હાજર હતી। તે સમયે મહિલાઓ સાથે થયેલા વર્તનનો મામલો અમારી સામે આવ્યો છે। આ અંગે સિનિયર અધિકારીને તપાસ સોંપાઈ છે। તેમાં જેનો પણ વ્યવહાર યોગ્ય ન હોવાનું સામે આવશે તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। જે વાત ધ્યાને આવી છે તેમાં પાણી મામલે વિરોધ પ્રદર્શન ચાલી રહ્યું હતું, તેમાં રેલી કાઢવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો। તે મામલે મહિલાઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી। तो बाहर निकाला था, तहसील के बाहर निकाला था। ऐसे दृश्य सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ है। पुलिस किस दिशा में तपास कर रही है? समा में जो कल पानी के लिए विरोध हो रहा था और उस दरमियान पुलिस बंदोबस्त रखा गया था। उस दौरान जो अटकायत ये प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह हुआ है, तो उसके मामले में पुलिस का जो कार्रवाई है उस पर हम इंक्वायरी कर रहे हैं और इंक्वायरी का जो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से आगे हम एक्शन लेंगे। और पूरा जो इश्यू है उसको बहुत ही सेंसिटिवली लिया गया है और हम उसी दिशा में तपास करेंगे कि महिलाओं को डिटेन किया गया तो ज़रूरत थी या नहीं थी, और सेंसिटिविटी के साथ ही हम इसको डील करेंगे। पुलिस को प्राथमिक जानकारी क्या थी और पुलिस कैसे क्या एक्शन लेने वाली थी? पुलिस को यही जानकारी थी, महिलाओं का तो नहीं पता था, बट वहाँ विरोध होने वाला है तो उसके कंटेक्स्ट में बंदोबस्त रखा गया था। और जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से हम इंक्वायरी तो कर ही रहे हैं, बट उसमें रैली निकालने की विदाउट परमिशन रैली निकालने की कोशिश करी गई थी और पुलिस ने रोका था और डिटेन किया था। बट जो वीडियोस वगैरह है तो उसको हम सेंसिटिवली लेके उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं। हाँ, वही इंक्वायरी कर रहे हैं ना हम, तो उसमें जो हाँ तो वो सेंसिटिव मुद्दा है, तो हम इसमें जो भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो उसको ध्यान में रखते हुए सेंसिटिविटी के साथ ऐसे इश्यूज को डील करना चाहिए, उसके लिए हम टोटली एग्री हैं। किस प्रकार की स्क्रूटिनी पुलिस कर रही है? इसमें डीसीपी रैंक के ऑफिसर तपास कर रहे हैं और रिपोर्ट आने के बाद हम उस पर एक्शन लेंगे। स्थानिकों का आक्षेप है कि ये षड्यंत्र का माहौल छाया है। नहीं, पुलिस तो जो बनाव बना है और महिलाओं को जो डिटेन किया गया है तो उसी पे तपास कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद जो हुआ आप उसको सही मानते हैं? नहीं सही नहीं है, बट देख लेते हैं। जो वीडियो वायरल किया गया है उसके बारे में? हाँ, तो उसी के ऊपर से तो तपास हो रही है।